Hello students, welcome to my video lecture. First, Brahmanad. Om Shanti Shanti Shanti. In last class, we discussed fundamentals of functions, also some particular standard function and their graphs. One is identity function. Identity function means a function f from R to R is said to be an identity function if f of x is equal to x. Okay, f of x is equal to x, that means each value of domain is related to itself, that is associated with itself. So f of x is equal to x, and it is denoted by small I, small d, base capital R. So IDR. So IDR of x is equal to x for all x belongs to set of real number R. And the graph is the line passing through origin, making an angle 45 degree with positive x-axis in positive sense. Next one, constant function. Constant function means a function f from R to R is said to be constant function if f of x is equal to constant. F of x is equal to constant. Okay. So domain of function is real number R, but output is only constant c. तो curly bracket भितर c रहे, means c lies within two curly brackets. f of 0 is equal to c, f of 1 is equal to c, f of 2 is equal to c, f of minus 1 is equal to c, f of root 2 is equal to c. So every input has output is only one. It is called constant function. Okay. Next, polynomial function. A function f of x is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus dot 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 plus an x to power n. N belongs to natural number. Condition n not equal to 0, so it is a nth degree polynomial. Every polynomial function has a domain real number R, but different polynomial function has different range. Okay. So linear, quadratic, cubic, biquadratic, all are polynomial functions. Okay. Achha. Today we are going to discuss modulus function or absolute valued function. Absolute valued function. Okay. Modulus function. Modulus function are also called absolute valued function. Absolute valued function. Absolute valued function. A function f such that R to R is said to be an absolute valued function. Absolute valued function or modulus function if f of x is equal to mod of x. F of x is equal to mod of x, also is equal to x when x greater than 0 and 0 when x is equal to 0 and minus x when x is less than 0. That means when x is positive,
mod of x is x. When x is negative, mod of x is minus x. When x is equal to 0, the mod of x is equal to 0. Okay, that is mod of 0 is equal to 0. Mod of minus 5 is equal to mod of minus 5. So mod of x. So here x is equal to minus 5. So minus 5 is less than 0. Therefore mod of x is equal to minus x is equal to minus of minus 5 is equal to plus 5. Mod of 7 is equal to 7 because x is equal to 7. X is equal to 7 greater than 0. Therefore mod of x is equal to x is equal to 7. When x is greater than 0, it is plus. When x is also negative, it is also plus. Hence mod of x gives non-negative value. Hence mod of x gives non-negative value. So domain of f is equal to real number r, because we can take the value x is positive 0 to infinity, x also negative minus infinity 0, and including x means x is equal to 0 also. So hence domain is set of real number r. And range of f means mod of x gives non-negative value means only positive and 0. Okay. So range of f is equal to curly bracket 0 union r plus, that means 0 to infinity. So 0 is included. So r plus means what? R plus is equal to x such that x greater than 0. This is r plus, that means 0 to infinity. So in case of r plus, 0 is not included. Hence range of f is equal to curly bracket 0 union r plus. That means curly bracket 0 union open interval 0 to infinity, that is equal to semi-close 0 comma infinity. So this is the range of the function. Properties of modulus function. Properties. 1. Square root of x is equal to plus or minus x lekha hoji is equal to, this is the mod of x. Square root of x square. Square root of x square is equal to plus or minus x is equal to mod of x. 2. Mod of x is always greater than or equal to x. Mod of x is always greater than or equal to x. 3. Mod of x is always greater than or equal to minus x also. Mod of x is always greater than or equal to minus x. Okay. 4. Mod of xy is equal to mod x into mod y. 5. Mod of x by y is equal to mod x by mod y. Condition y not is equal to 0. 6. Mod of x plus y less than is equal to mod x plus mod y. Mod of x plus y less than is equal to mod x plus mod y. 7. Mod of x minus y greater than is equal to mod x minus mod y. Mod of x minus y greater than is equal to mod x minus mod y. These are the some properties of modulus function. Okay. Next, graph the graph of modulus function. Y is equal to mod x.
y is equal to minus mod x. Y is equal to mod x, y is equal to minus mod x. Since mod x is greater than or equal to 0, mod x is always gives non-negative value, therefore y is always greater than or equal to 0. But x taking both positive and negative. So x can be taken as both positive and negative, but y is always greater than or equal to 0. Hence the graph lies in first and second quadrant. In first case. In second case y is only negative, less than or equal to 0, because mod x is always greater than or equal to 0, so minus mod x is less than or equal to 0. So in this case the graph lies between third and fourth quadrant, but this is first and second quadrant. Okay, अच्छा देखो ताल देखिए x and this is y. तो x is 0, y is 0. x is 1, y is equal to 1. x is minus 1, y also 1. x is 2, y is 2. x is minus 2, y is 2. Okay, that means this is the x axis, this is the y axis, this is the origin. This is 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, 1, 2, 3. So x is 0, y is 0. Okay, so x is 1, y is 1. x is 2, y also 2. x is 2, y is 2. x is 3, y is 3. Join करो. So this is the line. x0, y0, x1, y1, x2, y2, x3, y3. Means this angle is 45 degree. This angle is 45 degree. Next, x is minus 1, y is plus 1. x is minus 2, y is plus 2. x is minus 3, y is plus 3. जॉइन करो. तो V शेप ये एंगल कहते हैं 135 डिग्री. दिस एंगल इज 135 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस. तो लाइक V शेप ओके. तो y इज इक्वल टू mod x. तो mod आगे कौन है प्लस. तो the curve opening, the graph opening upward. Here the graph, here minus sign is there. Before the mod x, it is minus sign is there. Hence the graph opening downwards. ये graph opening कौन upwards, ये graph opening कौन अब downwards. देखो ठीक है. x and कौन ना y. When x is equal to 0, y is 0. x is equal to 1, y is equal to minus 1. x is equal to minus 1, y also minus 1, because minus 1 रो mod means 1. तो minus of minus 1 रो mod means minus 1. Okay, तो when x is equal to 2, y is minus 2. x is equal to minus 2, y also minus 2. Draw the graph. This is x axis, this is y axis, the origin. 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, 1, 2, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. When x is equal to 0, y is equal to 0. x is 1, y is equal to minus 1. x is 2, y is equal to minus 2. x is equal to 3, y is equal to minus 3. Join करो. So x is equal to minus 1, y also minus 1. x is equal to minus 2, y is equal to minus 2. x is equal to minus 3, y is equal to minus 3. तो ये ला उल्टा V shape, because mod of x आगे कौन अच्छी माइनस अच्छी. ये mod of x आगे कौन अच्छी प्लस अच्छी. तो प्लस थी बारू ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग डाउनवर्ड. Since mod x greater than or equal to 0, therefore minus mod x is less than or equal to 0. This implies y less than or equal to 0.
So the graph lies in second, third and fourth quadrant. Therefore the graph lies in third and fourth quadrant. Fourth quadrant. But here mod x greater than equal to 0. So this implies y greater than equal to 0. This implies the graph lies in first and second quadrant. First and second quadrant. Okay. So this is V shape. Mod x. The graph of mod x is V shape. Okay. Means in this case we have a minimum value. In this case we have a maximum value because this is a maximum value. 8 point. So no minimum value. So in this case we get a minimum value of y, and minimum value of y is 0. No maximum value, because x tends to plus or minus infinity, y tends to plus infinity. In this case we get a maximum value, and maximum value is y is equal to 0. Okay. No minimum value because x tends to plus or minus infinity, y tends to minus infinity. So no minimum value. Okay. Next question, y is equal to mod of x plus 2, another one y is equal to minus of mod x minus 3. So here is given plus sign. Before mod it is given plus sign. The graph is opening upward. Here is given before mod it is given a minus sign. So graph is downwards. The graph opening downwards. Okay. So first find the value of x where y is 0. Find the value of x where y is equal to 0. That means x near y near. So x 0, y 2. X is minus 2, y is 0. X is minus 2, y is equal to 0. Achha, next x is minus 4. X is minus 4, y is equal also plus 2. Okay, x is minus 4, y is equal also plus 2. Okay. अच्छा देखो ताहले x, this is y, origin 1 2 3 4 5. This is minus 1 minus 2 minus 3 minus 4. 1 2 3 4. X is 0, y is minus 2. So x is 0, y is 2. X is 0, y is 2. Okay. X is minus 2, y is 0. X is minus 2, y is 0. X is minus 4, y is 2. X is minus 4, y is 2. Okay. तो देखो टाइम मिल गला सब v shape. Always it is v shape. This is 45 degree. This is 135 degree. तो always it is कौन v shape है नहीं. तो this is v shape. X is equal to 0, y is x is equal to 0. When x is equal to 0, y is equal to 2. X is minus 2, y is equal to 0. X is minus 4, y is 2. X is equal to minus 4. Put here minus 4. Minus 4 plus 2 is minus 2. Minus 2 mod plus 2. So when x is minus 4, y is 2. So this point is
minus 4 comma 2. This point is 0 comma 2 and this is minus 2 comma 0. Okay. Here देखा था ये भी सेम टाइप ठीक है लगा हवा x निया y निया x is equal to 0 y is equal to minus 3 x is equal to 0 y is equal to minus 3 for what value of x y is 0 now x is equal to 3 y is equal to 0. Okay. Next x is equal to 6 y is equal to minus 3 देखा था x y 1 2 3 4 5 6 this is minus 1 minus 2 minus 3 or minus 5 1 2 3 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 x is equal to 0 y is equal to minus 3 x equal to 0 y is equal to minus 3 and x is equal to 3 y is equal to 0 देखो एटा minus 2 for what value of x y 0 तो से ऊपर चलला बिकज अगर प्लस अच्छी ये for what value of y for what value of x y 0 ना 3 तो फिर x is equal to 3 y is equal to 0 तो ये डाउनवर्ड हम ये कौन हम कहल डाउनवर्ड एंड v शेप है कि x टा 6 y minus 3 x टा 6 y minus 3 तो ये है 6 comma minus 3 जॉइन कर ये v शेप दिस इज द कर्व दिस इज द स्ट्रेट लाइन जेहेतु y आगे कौन अच्छी मोड आगे नेगेटिव अच्छी तो कौन डाउनवर्ड मोड आगे नेगेटिव कौन हम डाउनवर्ड ओके तो यहाँ कोड स्टार्ट हो जो y टा 0 हो तो दिस पॉइंट इज 3 comma 0 जहाँकि यही पॉइंट है अपवर्ड बिकज अगर प्लस साइन अच्छे ये माइनस साइन थी कौन है डाउनवर्ड ओके नेक्स्ट टाइप y इज इक्वल टू minus 3 प्लस mod ऑफ x minus 1 here y इज इक्वल टू 4 प्लस mod ऑफ x प्लस 2 mod ऑफ x प्लस 2 फर्स्ट बाहर कर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x mod ऑफ x minus 1 0 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x mod ऑफ x minus 1 0 ना फिर x इज इक्वल टू 1 इट इज 0 x इज इक्वल टू 1 इट इज 0 तो ठीक अच्छे तो x तो y when x is equal to 1 equal to 1 तो y is equal to minus 3 x is equal to 1 it is 0 तो 0 minus 3 means minus 3 next one x is equal to 3 मतलब x is equal to 4 x is equal to 4 y is equal to 0 4 minus 1 3 mod 3 minus 3 0 x is equal to minus 2 x is equal to minus 2 y also 0 देखो ताहले this is x axis this one y axis origin 1 2 3 4 5 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 1 2 3 4 5 तो x minus 1 minus 2 minus 3 x is equal to 1 y is equal to minus 3 x is equal to 1 y is equal to minus 3 चलो 1 comma minus 3 x is equal to 1 y is equal to minus 3 x is equal to 4 y is equal to 0 x is equal to minus 2 y is equal to 0 minus 2 y is equal to 0 एठू आस v शेप है एठू आस कौन तुम v शेप दिस इज v शेप एटा जॉइन कर एटा जॉइन कर बिकज ये मोड आगे कौन अच्छे प्लस तो मोड आगे प्लस अच्छे मीन इठू आसला कौन ये तुम मिनिमम मीन्स मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू minus 3 मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल कौन minus 3 ओके कहीं ये स्टार्ट हो ग्राफ तो ये है मिनिमम तो मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू minus 3 फिर x इज इक्वल टू 1 ये मिनिमम पॉइंट ऑफ मिनिमम हियर गिवन प्लस साइन तो मोड आगे प्लस थे ओपनिंग ऑफ मोड आगे
सॉरी या माइनस कर दबा मोड आगे माइनस रेटा कौन ओपनिंग डाउन ये वो ओपनिंग कौन हम डाउन बिकज मोड आगे कौन माइनस तो ये ओपनिंग कौन डाउन देख तो ये भी देख एक्स वाई फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स मोड ऑफ एक्स प्लस 2 इज 0 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स मोड ऑफ एक्स प्लस 2 इज 0 -2 तो पुट हियर -2 तो y इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 4 नेक्स्ट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x y is 0 when x is equal to 2 y is 0 when x is equal to minus 4 y also 0 -4 plus 2 from mod 2 तो sorry minus 6 when x is equal to -6 plus 2 -6 plus 2 -4 mod plus 4 तो 4 -4 0 अब चेक करो दिस इज x दिस इज y origin 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 5 -6 okay 1 2 3 1 -1 -2 -3 -4 -5 4 तो x इज इक्वल टू -2 x इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू 4 नहीं जीवा x इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू 4 x is equal to 2 y is equal to 0 x is -6 y is equal to 0 तो x is equal to -2 y is equal to +4 यही पॉइंट this point this is -2, 4 x is 2 y is equal to 0 x is -6 y is equal to 0 तो ये देखो ग्राफ तो ये V शेप और उल्टा भी बिकज मोड आगे कौन अच्छी माइनस तो माइनस थे कौन हम मोड आगे माइनस अच्छी तो कौन हम डाउनवार्ड मोड आगे प्लस अच्छी इट इज अपवार्ड ओके तो आर मैक्सिमम वैल्यू आसो डाउनवर्ड आसूँ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो मैक्सिमम वैल्यू इज 4 एट एंड इट अकर्स व्हेन x इज इक्वल टू -2 here minimum value is -3 and it occurs when x is equal to 1 okay so this is the graph of modulus function okay these are the homeworks for you draw the graph of the following functions y is equal to mod of 3 minus x y is equal to 5 plus mod x y is equal to -7 minus mod of 2 plus x next y is equal to 3 plus mod of 2 minus x okay next greatest integer function and also called floor function greatest integer function greatest integer function bracket रे GIF also called floor function greatest integer function are also called floor function a function f such that r to r is called a greatest integer function if f of x is equal to square bracket x square bracket greater than function is denoted by square bracket x तो square bracket x is equal to dot so -1 when -1 less than is equal to x less than 0 when 0 less than is equal to x less than 1
1 when 1 less than is equal to x less than 2 dot dot n when n less than is equal to x less than n plus 1 dot dot. That means when x lies between minus 1 to 0, when x lies between minus 1 to 0, so this is one integer, this is another integer, so they are consecutive integer. So when x lies between minus 1 to 0, this is minus 1, this is 0, the square bracket of x means we take minus 1 value. This is called floor, this is called ceiling, this is called floor. So the function is also called floor function, because we take only means तल फंक्शन ना तल भैल्यू ना है कि दिस इज -1 दिस इज 0, तो वी चूज दिस वैल्यू, दिस इज कॉल्ड फ्लोर, तो द फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड फ्लोर फंक्शन. ओके, तो व्हेन x lies in -1 0, तो स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x इज -1. When x lies between 0 and 1, the square bracket of x is equal to 0. When x lies between 1 and 2 means when x lies between two consecutive value of two consecutive integer, then we choose lower one. We choose only lower one. Okay, तो example देखता हले. Example square bracket of 0 is equal to 0. Square bracket of 1 is equal to 1. Square bracket of -5 is equal to -5. Square bracket of -7 is equal to -7. Means square bracket of integer is integer. Okay, square bracket of integer is integer. Therefore, square bracket of integer is equal to integer. Okay, next. Square bracket of 0.5, so 0.5 lies between 0 and 1, we take only 0. Square bracket of 3.93 means integral value. Square bracket of 5.75 only integral value ही नबा में integral value. Square bracket of 0.9999 infinite 9, तो 0 हमें कौन ना ओनली इंटीग्रल वैल्यू. स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 9.00001, तो 9 मीन्स हमें कौन नबा इंटीग्रल वैल्यू ही नबा इंटीग्रल वैल्यू है. ये प्लस फॉर्म अच्छी प्लस अच्छी. ओके, तो हम टे कौन करिया इंटीग्रल वैल्यू नबा. नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ -1.5 is equal to -1 -2 means ये जहाँ अच्छी तारू 1 माइनस करिबो. स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ -0.2, तो -0 -1 -1. स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ -3.8 -3 -1 -4 ये जहाँ अच्छी से 1 माइनस करिबो. यदि नेगेटिव अच्छी नेगेटिव नॉन इंटीजर जरा नॉन इंटीजर एंड नेगेटिव वैल्यू है कि, तो आम कौन चूज करिया ओनली मीन्स नॉन मीन्स ये इंटीग्रल पार्ट रू अगेन 1 माइनस करिया इंटीग्रल पार्ट रू, बट दे आर पॉजिटिव वैल्यू, दे आर कौन पॉजिटिव वैल्यू, तो आम कौन कला ओनली खाली पॉजिटिव इंटीजर ही ना. तो ये इंटीग्रल पार्ट ही निहाला ये इंटीग्रल पार्ट, बट ये कौन कले ना इंटीग्रल पार्ट रू 1 अगेन थोड़ा माइनस कराला बिकज आगे कौन साइन नेगेटिव अच्छी. -5.0001, तो -5 -1 is equal to -6. Square bracket of -pi means -3.141 square bracket is equal to -3 -1 -4. Okay, -√2 means -1 pi -1 पॉइंट रूट वैल्यू कौन था, तो -1.414 स्क्वायर ब्रैकेट, तो -1 -1 -2. ओके, डॉट डॉट माइनस 0.00001 -0 -1 -1.
तो because minus 0.001 lies between -1 and -2. Sorry, minus 0.001 lies between -1 and 0. तो ये है -1 ये है 0 ये भितर के रोचे -0.001 तो ये चूज लोअर वन ओके तो ताले कौन देखो ऑल द आउटपुट्स आर इंटीजर इंटीग्रल फॉर्म देखो ऑल द आउटपुट्स आर इंटीजर फॉर्म हेंस द रेंज ऑफ द आउटपुट इज ओनली इंटीजर एंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन range of the function is integer range of the function is integer because it gives only integral value and the domain of the function domain is we can take input all real numbers means it's positive real negative real fractional value next one irrational number also नहीं तो देखो असला domain तो रिमाइंडर domain of function domain of fx means real number r जहाँ नली भी होगा input टा all real value of x output range of function range of fx is only integral value देखो only integer है तो range रा कौन पाया हमें integer value integral value output टा कौन आସୁଛି हमरो output टा only integer ही आସୁଛି है तो range is कौन आसला हमारा इंटीजर एंड डोमेन इज ऑल रियल नंबर आर ओके प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेट n इज एन इंटीजर एंड x is any real value lies between n and n plus 1 then the following properties of GIF are then the following properties of GIF means greatest integer functions are 1 n is integer तो integer square bracket of n is equal to n 2 square bracket of minus n is equal to minus square bracket of n is equal to minus n because n is integer तो integer square bracket integer ही रहेगा 5 स्क्वायर ब्रैकेट 5 माइनस 5 स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 5 0 स्क्वायर ब्रैकेट 0 ओके तो इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट इंटीजर 3 माइनस x प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट और x इज एनी रियल नंबर n इज इंटीजर तो दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x plus n because n is integer एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ एग्जाम्पल स्क्वायर ब्रैकेट 3.5 प्लस 2 स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू दिस जो 5.5 स्क्वायर ब्रैकेट 5.5 स्क्वायर 5 बिकॉज 5.5 लाइज बिटवीन 5 and 6 तो वी चूज लोअर वन अच्छा तो वी कैन राइट आल्सो 3.5 प्लस 2 स्क्वायर ब्रैकेट दिस इज इंटीजर तो 3.5 प्लस 2 is equal to 3.5 square bracket plus 2 square bracket is equal to 3.5 square 3 2 square bracket 2 is equal to 5 है कि बुझीपार मनकर -4.7 प्लस 3 स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू -4.7 स्क्वायर ब्रैकेट प्लस 3 तो -4.7 स्क्वायर ब्रैकेट -5 प्लस 3 इज इक्वल टू -2 अच्छा ये लिखे -4.7 प्लस 3 इज इक्वल टू -1.7 स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू -2 -1 ये -4 -1 ओके नेक्स्ट 4 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x is equal to
minus x minus square bracket of x is equal to minus minus square bracket of x minus 1 minus square bracket of x minus 1 चेक कर दीजिए चेक एग्जाम्पल minus 5.2 स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल minus 5.2 स्क्वायर ब्रैकेट minus 1 अच्छा इज इक्वल दिस इज minus 5.2 स्क्वायर ब्रैकेट 5 दिस इज 5.2 स्क्वायर ब्रैकेट 5 minus 1 is minus 5 minus 1 is minus 6 minus 5.2 स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू दिस इज minus 5 अच्छी तो अगर नेगेटिव अच्छी तो यह हम -6 बिकॉज -5.2 लाइज बिटवीन -6 टू -5 तो चूज दिस वन ओनली आम कौन चूज करवा लोअर वन को चूज करवा ओके तो माइनस स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर ब्रैकेट एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर ब्रैकेट एक्स माइनस 1 ओके नेक्स्ट 5 x plus square bracket of minus x sorry square bracket of x plus square bracket of minus x is equal to when x is integer it is 0 comma x belongs to z and minus 1 when x does not belongs to z minus 1 when x does not belongs to z example देखता है तो 3 plus square bracket of minus 3 minus 3 is equal to 0 5.2 plus square bracket of 5 minus 5.2 so this is a 5.2 okay x sorry square bracket so square bracket of x plus square bracket of minus x square bracket of x plus square bracket of minus x is equal to 0 when x belongs to z and minus 1 when x doesn't belong to z तो ये ला square bracket of 5.2 is 5 this is a minus 6 तो minus 1 5.2 square bracket of 5 minus 5.2 square bracket of minus 6 तो this is minus 1 तो when x doesn't belongs to z square bracket of x plus square bracket of minus x is equal to minus 1 and 0 when x belongs to set of integer z okay next graph of greatest integer function graph of greatest integer function y is equal to square bracket x okay तो f of x नहीं तो f of 0 स्क्वायर ब्रैकेट 0 f of 0.1 0 f of 0.2 0 f of 0.9 0 0.9 स्क्वायर ब्रैकेट 0.9 is 0 0.0 स्क्वायर ब्रैकेट 0 0.1 स्क्वायर ब्रैकेट 0 0.2 स्क्वायर ब्रैकेट 0 ओके अच्छा f of 1 1 f of 1.1 1.1 स्क्वायर ब्रैकेट 1 f of 1.2 तो 1.2 स्क्वायर ब्रैकेट 1 f of 1.9 तो 1.9 स्क्वायर ब्रैकेट कौन 1 ओके नेक्स्ट f of minus 0.0 minus 0.01 minus 1 f of minus 0.1 minus 1 f of minus 0.8 minus 1 f of minus 0.99 minus 1 f of minus 1 minus 1 f of minus 1.0001 minus 2 f of minus 1.1 minus 2 f of minus 1.3 minus 2 minus 1.9 minus 2 f of minus 2 minus 2
ताल देखो ताल ग्राफ देखो कि देखो this is x, this is y, this is origin. 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -4 -5 origin. देखो when x is equal to 0, when x is equal to 0, y is equal to 0. When x is equal to 0.1, y is equal to 0, 0.2, y equal to 0, 0.3, x equal to 0.3, y equal to 0. तो x is equal to 0.9, y equal to 0 means एतिकी आसीबो 1 आसीबो 1 को टच करिया पूरा रहि जिवो किंतु एटा आसीबो पूरा हला नाही हमर कोन आसीबो सेटा टोटल आसीबो बुझि परछो अच्छा तो 0 टा इनक्लूडेड बट 1 नॉट इनक्लूडेड. Next, when x is equal to 1, y is equal to 1. When x is equal to 1.1, y is equal to 1. X is equal to 1.2, 1 is 1. X is equal to 1.3, y is equal to 1. X is equal to 1.9, y is equal to 1. X is equal to 2, y is equal to 2. तो 2 को टच करियोनी ओके. नेक्स्ट व्हेन x is equal to 2, y is equal to 2. When x is equal to 2, y is equal to 2. X equal to 2.1, y is equal to 2. X equal to 2.2, y is equal to 2. X equal to 2.3, y is equal to 2. X equal to 2.4, y is equal to 2. X equal to 2.9, y is equal to 2. X is equal to 3, y is equal to 3. जॉइन करो तो 3 को टच करियोनी ठीक है. नेक्स्ट 3 to 4 भीतर आसियो 4 को टच करियोनी एंड सो नेट देखो x is equal to -0 point something, y is equal to -1 टच करियोनी है ना एंड असला -1 आसुची. x is equal to -1, y equal to -1. X is equal to x equal to -0.1, y equal to -1. X equal to -0.2, y equal to -1. तो when x approaches to -1, y is -1. Next, x is equal to this type. -2 को टच करिवो कि एटा को टच करिवोनी. एट देख -3 आसो कि -2 को टच करिवोनी. तो ये हम कौन दिस इज कॉल्ड स्टेप फंक्शन. दिस इज कॉल्ड स्टेप फंक्शन. स्टेप फंक्शन स्टेप. तो दिस इज आल्सो कॉल्ड स्टेप फंक्शन. तो स्टेप चल चल जीव एस इनक्लूडेड एस नॉट इनक्लूडेड ओके. दिस इज कॉल्ड ए स्टेप फंक्शन. दिस इज कॉल्ड a step function. Step function means in different interval f of x is constant. Okay, in different interval the function gives a constant value only, not variable value, only constant value. Okay, next one, least integer function. Least integer function. Least integer function LIF. Least integer function, a function f of x
is said to be least integer function if f of x is equal to this type. X, okay, and is equal to 0 when minus 1 less than x less than is equal to 0, 1 0 less than equal to x less than is equal to 1, 2 less than x less than is equal to 3. Dot dot, okay, means it is going to have upper value. When x lies in two consecutive integer, we choose upper one means n to n plus 1. When n and n plus 1 both are integer, when x lies between n and n plus 1, the least integer function means n plus 1. Okay, so it is called ceiling function, CEILING, ceiling function because we choose only upper one, 0, 1, 2 and so on. Okay, so domain of f, domain any real value जहाँ भी इनपुट नेले हम नहीं परिबा, but range of f is only integer, range of f is integer z. Example 0.5 the square bracket, तो 1 choose करिया because 0.5 lies between कौन 0 and 1. 1.9 square bracket 2 नबा है लगी 3.00001 square bracket 4. Okay, integer square bracket square not square bracket, this is the least one तौला रहिबो. Okay, 5 रो least integer 5, 0 रो least integer 0, -9 रो least integer -9 means integer least integer. Okay, एडी कौन 0 रे 1 ऐड करहला, 1 रे 1 ऐड करला, 3 रे 1 ऐड करहला, एडी -2.1 रो least integer -2, -7.9 रो least integer -7, -3.5 रो least integer -3. ये हमारा least integer function. Okay, so it is called ceiling function means lower one to choose करिबा. नेगेटिव थिले नेगेटिव नहीं हो देखटा, कि एडी कौन हो पॉजिटिव थिले नॉन इंटीजर बट पॉजिटिव थिले एथरे 1 हम ऐड करिबा हला. ग्रेटर इंटीजर रे कौन करले 8 to 1 माइनस करथिले हला. ग्राफटा जस्ट कौन होतला हमर सही स्टेप फंक्शन गाले हबो, किंतु कौन होतला हमर एपटे हमें कौन करथिले एटा बुझे करथिले हमें एमिति करा होतला, एटा को इनक्लूड करथिले, एटा को एक्सक्लूड करा होतला. एटा को बर्तन जस्ट ओल्टा है जो ये हबो एक्सक्लूडेड, ये हबो कौन इनक्लूडेड. ओके, सेटा बरा करिवो. नेक्स्ट वन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल ION, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. Okay, a function f of x is said to be a fractional part function if y is equal to f of x is equal to curly bracket x. It is denoted by curly bracket x is equal to x minus square bracket x. Define as x minus square bracket x. Okay, so ताल देखो हमारा domain of f is equal to real number r means we put x, we can take the value of x is any real number. Okay, and the output domain range of f means this is 0 to 1, 0 to 1, 0 1 और open interval. देखो कि देखो f of
0, तो कर्ली ब्रैकेट 0 इज इक्वल टू 0 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 0, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ 1, तो कर्ली ब्रैकेट 1 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ इंटीजर इज 0, एफ ऑफ इंटीजर इज 0। बट एफ ऑफ नॉन इंटीजर, एफ ऑफ 3.5, तो 3.5 कर्ली ब्रैकेट इज इक्वल टू 3.5 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3.5 इज इक्वल टू 3.5 माइनस 3 इज इक्वल टू 0.5, 0.5 बिलोंग्स टू 0 and 1। दिस इज द आउटपुट लाइज बिटवीन दिस इंटरवल। ओके, एफ ऑफ माइनस 2.9 इज इक्वल टू माइनस 2.9 कर्ली ब्रैकेट इज इक्वल टू, पुट द वैल्यू माइनस 2.9 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 2.9, तो इज इक्वल टू माइनस 2.9 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 2.9 मीन्स माइनस 3। ओके, तो इज इक्वल टू माइनस 2.9 प्लस 3 इज इक्वल टू 0.1, तो 0.1 बिलोंग्स टू 0 and 1। now f of 0.01 कर्ली ब्रैकेट 0.01 इज इक्वल टू 0.01 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 0.01 इज इक्वल टू 0.01 माइनस 0.01 रो कर्ली ब्रैकेट 0 स्क्वायर ब्रैकेट 0 0.01। ओके, नेक्स्ट f of माइनस 1.001 इक्वल टू माइनस 1.001 कर्ली ब्रैकेट इक्वल टू माइनस 1.001 रो माइनस स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 1.001 माइनस 1.001 माइनस दिस इज माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1.001 इज इक्वल टू 0.99 0.999 ओके, तो 0.999 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ओके, 0 to 1, तो आउटपुट इज सेमी क्लोज 0 to 1 के बेला आसोनी 0 आसपर 0 टू बड़ बट 1 टू सान 0 टू बड़ बट 1 टू छोट। ओके, तो ग्राफ देख टे ग्राफ देख टे दिस इज एक्स दिस इज वाई ओरिजिन ये है 1 तो ग्राफ 0 1 है तो ये भितर ही ग्राफ रहा तो एक्स इज 0 वाई इज 0 एक्स इज मीन एमती टच करनी नेक्स्ट आउ थे आसला टच करनी 2 अगेन 3 अगेन 4 ये -1 ये भीतर है ग्राफ when x lies between 0 and 1 when x lies between 0 and 1 कौन हम 0 and 1 when x lies between 0 and 1 f of x is equal to when x is equal to 0 f of x equal to 0 0.1 0.1 0.2 0.2 when x is equal to 1 it is again 0 तो ये हमारा ग्राफ। ओके, अच्छा इन नेक्स्ट क्लास वी शैल डू और वी शैल डिस्कस another some standard functions. Okay.